Hello everyone. Hi everyone, slot 2 of the MBA CET has just ended. फीडबैक आना चालू हो गया स्टूडेंट से. We are just collating the information, but some basic instructions and information I think Shrikant you wanted to give because you took the paper in the morning. Yeah. Once again, welcome back everyone. First, rough sheet is been given. Lot of students had doubt. Second, PC issues हो रहा है कुछ लोगों को जिसके वजह से stuck हो रहा है paper, but they are getting their switched. So don't panic because timer आपका pause होता है. So maybe some of those issues might happen. So please be careful and be vigilant. अटल मॉक्स के जैसा ही इंटरफेस है सिमिलर एंड स्टूडेंट्स आस्किंग कि नेक्स्ट रेस्पॉन्स शीट कब आएगा मे बी अराउंड 2 to 3 weeks एंड I think we for the slot 2 review we have one of our TDP student joining with us. I'll allow them in. Aditya. Yeah. Hey, hi Nitin. Hi, Shivkan, Sridhar, Aditya, hi. Hi Nitin. Okay, Sada paper. What's your take? Uh, Easy to moderate. So there were no puzzles in LR, all were singlets. Then in VA, vocab थोड़ा moderate level पे था, moderate to tough. But Okay. RCs were easy, straightforward. Grammar was also straightforward. In abstract, बहुत सारे question PYQ थे. Okay. So roughly 20 questions were PYQ, I would say. Amazing. So And in fonts, everything was straightforward. Means one line questions, one liner questions, and direct straightforward answer. So I perfect. would say easy to moderate-ish paper. Sort of similar to I think slot one, Not but I one. think yeah, almost Yeah, abstract be as you mentioned. correct. Did you see abstract में series, odd man out, pattern, counting? Sorry, this kind of questions. Counting figure वाले question बहुत ज़्यादा थे कैसे थे? आई थिंक दो क्वेश्चंस थे हमारे स्लॉट में, तो क्या? जिसमें एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था रेक्टेंगल वाला, तो क्या? एंड ट्राइंगल्स वाला थोड़ा टफ था. मैंने जो भी नियर बाय नंबर दिखा मैंने वो मार्क करके आगे बढ़ गया. इनपुट आउटपुट का एक एक क्वेश्चन था, हाँ, एक same as इनपुट के एक आउटपुट, एंड Did दोज you वर find प्रीटी arrangement डिफिकल्ट. questions in LR? Linear arrangement यानी कि यस यस यस, position सर्कुलर का? नहीं दिखा, सर्कुलर एक भी नहीं था, ऑल वर Okay, लिनियर. okay, Not and even square, rectangle or anything. okay, and All what were about linear. vocab में RCs, grammar, PJs? Grammar was straightforward, as I said. Okay. RCs, एक RC थोड़ा difficult था. Okay. Something Mahatma Gandhi's voice, something RC था. Okay. That was थोड़ा difficult. बाकी तो straightforward थे. How many तीन number of RCs? Just four RCs. four RCs. तो same as Yeah. again. Slot one में भी Yes. 4 थे. Yes. Yes. Grammar के anywhere around 10 questions थे, like fill in the blanks, sentence, Yes. Correct. find the Correct. error वाले. That Correct. is also I think And similar. for DI, 10 questions, दो set, पांच question के. One Okay. was pie chart. Okay. That was, I guess, from CMAT or something. I can't Yeah. recall. Very And okay. DI का भी पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बार ग्राफ था, Okay. उसमें परसेंटेज दिए थे फॉर टैक्सेस एंड ऑल. तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स भी. Got it. So as far as I can understand, basis my first attempt का analysis and your analysis, that couple of constant thing is that 4 RC आ रहे हैं, 2 DI सेट आते हैं, 10 के करेक्ट. आसपास ग्रामर क्वेश्चंस है, अराउंड 7 to 8 vocabulary questions, राइट. no puzzles whatsoever, but doable easy questions. Main focus should be on question selection जो आसान है, करेक्ट. जो जल्दी करेक्ट. करना है. I And would recommend don't go for input output का questions, हाँ, because I solved one question and I
Got to know कि it is taking much time. So मैंने वो छोड़ ही दिए फिर बाकी के input output. Got it. I mean, the sequences are easy to understand, but then solve करने जाओगे तो Solve करना surprise question हाँ. basically. And questions were tricky कि step 4 में कैसा होगा तो कौन सा हाँ, left है. That correct. was a tricky part. And many questions in LR were like एक word दिया है उसके vowel के दो आगे करना है consonant के हाँ, दो पीछे करना है फिर rearrangement of उसको words. rearrange करना है. हाँ, So those were time consuming but correct. pretty straightforward. Correct. So I think very very similar to slot one. उसमें भी मेरे I think I had around 10 plus rearrangement. Ranking Right, के भी right. questions थे. Student Ranking, yes. ranking वाले. Okay, so sort of similar pattern. So what do you think? What was your attempt? What is your opinion on this? Uh, Was it similar to like the mocks? I mean, not yes. in terms of the scores, I would say, attempt wise. आपका कोई Attempt attempt? wise, it was pretty similar like mock means I would say better than mocks. Okay. So I attempted roughly 170 to 180 good attempts. Okay, that's very good. बाकी बीए में वोकैबुलरी ने मैंने काफी सारे मतलब गेस वर्क ही किया. Okay. And just FYI for students, Nitin has given 51 mocks on our portal. He has given the highest number of mocks. So, like, we can trust his analysis, I think. Yeah, Ditya, you want to ask anything? So now I think दोनों स्लॉट का डिफिकल्टीज आफ्टर हियरिंग फ्रॉम यू बोथ काफी सिमिलर लग रहा है पैटर्न भी सिमिलर है या दोनों स्लॉट्स का एंड हाँ लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली इजियर ही है पेपर स्लॉट 5 और 6 में जैसे आया था आई थिंक हाँ, या वो लेवल का है सिमिलर पेपर सिमिलर यस 5 और 6 लास्ट ईयर. yeah. Even the cutoff, I think, attempts वगैरह ना, if you had asked me, तो मेरे को भी लग रहा है कि 5 and 6 का लास्ट ईयर का जैसा था, sort of similar score and percentage. 160 प्लस यस हाँ, यस बोल सकते हैं. 155 160 प्लस. Perfect. Any surprises by the way? कुछ ऐसा नया क्वेश्चन आपको दिखा क्या कोई भी सेक्शन में? नो नॉट एज सच. No new questions. And नो did you नो had क्वेश्चन. those kind of words, odd man out like बहुत सारे words दिया like blade, knife, sword, hammer. तो यस उसमें से यस 5 words अलग है, एक word अलग है basically. That is यस so again I think same word sequence वाला questions they are followed. बट प्रिटी Also, स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाँ, Those one more questions were question. pretty straight. इन माई स्लॉट देयर वर क्वांट्स के मतलब कौन से क्वेश्चन ही बोल सकते हैं या उसको मैथमेटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं वॉट एवर बट टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस थे एलआर में. Yes, yes. तो आपके इसमें भी डिड यू फाइंड दैट? No boat and stream. मेरे इसमें no boat and stream. ओके. Mostly train and normal TSD questions. ओके, सो इन माई स्लॉट एज फार एज आई रिमेम्बर क्वांट्स में देयर वर मेजरली प्रॉफिट एंड लॉस के 7 क्वेश्चंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 7, टाइम एंड वर्क के 5. तो डू यू थिंक प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको भी दिखा आपके स्लॉट? Same था. ओके. Yes, and then these were there means ऑड मैन आउट नंबर सीरीज वाले हाँ इनकम्प्लीट number नंबर series. सीरीज. Yes, yes. One number series question was there in quants अच्छा, in my ओके, देयर slot. वाज ओनली वन. हाँ, ठीक. that एंड was एलआर pretty में देयर वुड हैव straightforward. बीन Cube मोर. minus one. ओके, गॉट Yeah. इट. एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस आपको दिखे क्या? नहीं, एक भी नहीं. No calendar question. गॉट इट. इन माय सो देयर वर टू कैलेंडर क्वेश्चंस, सो that is one thing. And anything else, idioms and phrases, did you get that in your slot? Uh, there were a couple of idioms. I can't Okay. recall them, but And advocate of devils, something that idiom was there. Devil's okay, advocate. okay, got it. So Uh, not more and than 5 or less than 5 also? less than five, less than five. और वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस थे क्या एलआर? दो questions थे Venn diagram. ना. And pretty straightforward. And you have हाँ, to just see कि triangle और square में कितना है. करेक्ट. तो yeah, I think what else is the syllogisms, did you see in LR? Yes, 2 3 questions were there in Okay, syllogisms. okay. Were they And easy to solve, easy, difficult? easy, easy.
Okay, so basically LR, if I summarize syllogisms के कुछ questions नो important थे assumptions जैसे क्वेश्चन, assumptions नहीं थे, नो क्रिटिकल रीजनिंग बेसिक क्रिटिकल रीजनिंग नहीं था। जो अटल And, मॉक्स सबसे ज्यादा अटल आता है। मॉक्स में ज्यादा था एक्चुअली। हाँ करेक्ट, तो आई had told at that time only that not necessarily going to be नो सेम क्रिटिकल नहीं रीजनिंग, आता है वही। एक भी पजल नहीं था वो। ओके, पेपर फोल्डिंग का कुछ क्वेश्चन आपको दिखा? नहीं, नो पेपर फोल्डिंग, ज्यादातर वाटर इमेज, मिरर इमेज का ही था क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक वेरी वेरी सिमिलर। एंड सेंटर का एक्सपीरियंस, लाइक डिड यू फेस एनी इश्यूज, कैसा लगा आपको लाइक सीईटी का एक्चुअली एक्सपीरियंस? इंटरफेस आई वाज एक्सपेक्टिंग अटल मॉक्स का रहेगा, हाँ, बट कुछ अलग ही था। और फॉन्ट में आपको आरसी पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी हो यू रहा हैव था। टू स्क्रॉल राइट, बहुत स्क्रोल स्क्रॉल स्क्रोल कर अप एंड स्क्रोल डाउन, यू कैन मिनिमाइज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट का साइज, हाँ बट दैट वाज प्रीटी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो हाँ, एंड द थोड़ा क्वेश्चंस वर प्रॉब्लम हो बिलो रहा द था। पैसेज। यस, करेक्ट। एंड आई थॉट वो कुछ कंप्यूटर्स असाइन करेंगे, बट दे हाँ, टोल्ड कि wherever you randomly you want to can see go you and can see. randomly see. Yes, yes. That was good. ठीक है, anything else that you want to add, any analysis or anything from your end? पैटर्न अगर दो स्लॉट्स में कंटिन्यू रहा है तो आई गेस थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी वही कंटिन्यू करेंगे वो। बट Possible, yes. Tomorrow only we'll get to know that. अगर इज थर्ड में, क्योंकि we have वेरी seen that अनप्रेडिक्टेबल। फर्स्ट लास्ट ईयर अटेम्प्ट में भी फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट दो डिफिकल्ट थे, तो सबको मतलब काफी ऐसा डर लग रहा था कि अभी तो मतलब डिफिकल्ट ही होगा। बट देन उसके बाद के सारे स्लॉट्स वर लाइक नॉट दैट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। या तो यू कैन नेवर से नेवर, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ मतलब स्टूडेंट्स फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कुछ भी दिमाग में रख के मत जाना कि कैसे भी आएगा। हाँ जस्ट कि इफ यू हैव टेकन पीवाईक्यूज बिकॉज बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इफ यू हैव टेकन इनफ मॉक्स तो यू विल बी एबल टू सॉल्व न क्वेश्चंस एंड अगेन फोकस is on question selection. वो important है first two slots. It will be important for the rest of the slots also. करेक्ट है। But खुद ही जज करना पेपर once you enter in the first 5 minutes कि कैसा है. Don't base it on first two slots. But review I think of the first two slots की easy था. At par था I think difficulty of both the slots and pattern was also very similar for the first two slots. But can't predict anything for the rest of the slots. okay, I think great insights. Thanks Nitin for like promptly joining us within like a second of asking. Thank you so much. Thank you so much, यू Nitin. Chalo, we'll see you again in the sessions for the next attempt. या Okay, ओके, बाय, टेक केयर। thank you. Bye. Okay, guys, any questions? Just to re do what Nitin has said, is to give a review again. First of all, coming back to the basics, rough sheet is given. PC issues some students are facing, so make you have to note that timer रुक जाता है, तो थोड़ा मे बी एडजस्ट करना पड़ सकता है, बिकॉज अभी आप कंप्लेंट भी करोगे तो उसका कोई क्विक रेजोल्यूशन मिलना मुश्किल है। थर्ड थिंग, इंटरफेस ऑलमोस्ट सिमिलर टू अटल, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट या doable, manageable. Maybe expect answer key or the response sheet in 2 to 3 weeks. And once again, coming to slot 2 review was quite similar to slot 1. And good attempt for anywhere around 170, 180. And cutoffs for again similar to slot 1. Yeah, Aditya, want to add anything? Nothing else. Again, पेपर का डिफिकल्टी प्रिडिक्ट मत करो अभी से कि अभी दो इजी आए तो टफ टफ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी इजी है तो इजी ही आएगा, वो भी जरूरी नहीं है। Correct. यू हैव टू जज इट पेपर चालू होने के बाद एंड अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट क्वेश्चंस। आई थिंक ये सेट्स में जस्ट बी केयरफुल, जैसे इनपुट आउटपुट का आई फ्यू स्टूडेंट्स वुड हैव मेड द मिस्टेक कि फर्स्ट क्वेश्चन दिखने से ही यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन,
बट इनपुट आउटपुट सेट में नहीं आ रहा है, इट इज अ सिंगल क्वेश्चन, तो जितना टाइम आपको सॉल्व करने में लगेगा मे बी इट्स नॉट वर्थ इट। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो, या 2-3 मिनट का भी है तो इट्स नॉट वर्थ इट। तो कोई भी सेट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जस्ट चेक कि कितना बड़ा सेट है। इनपुट आउटपुट कुड बी इवन डी आई। आज तो 2 सेट आए फॉर 5 क्वेश्चंस ईच, बट always check the number of questions in any type of set, because you might spend a lot of time and it can be only for 1 or 2 questions. Similarly for RCs also, check the number of questions in any set before attempting it. Perfectly summarized. Okay, I think that is it for slot to review. Any more questions can you see in the chat, Aditya? Yeah, there are no more questions. All again, first do slot ke guys, take a break, chill out today. All the best for everyone watching for the rest of the slots. And we'll be coming live after each and every slot to discuss the paper. So you can subscribe and join in. Yeah. Thank you. Thank you so much for guys for joining in.